students, how are you? Welcome back class 2. Now, this is your second class of chapter 2. Chapter 2, the two sculptors. This is your second class. Okay. So, in the first class, what did we do? In the first class, we have told you the story. Okay, I have told you the story, and let me revise the chapter one more time. Okay, the chapter was, there were two friends, Chandra and Lakshman. They both were sculptors. Okay, and who is a sculptor? Who makes statues out of wood, out of stone and of mud. Okay, they both participated in a competition in which Chandra was very mean. He tried to bully his friend Lakshman, and what did he do? He made all the tools of Lakshman blunt so that Lakshman could not work effectively. So that it was his plan to make Lakshman fail, and he wanted to win the competition. But what happened? In the competition, their tools were switched to each other. Okay, competition में क्या हुआ? उनके tools एक दूसरे से switch हो गया, जिसके कारण से चंद्रा ने जो एक प्लान बनाया था लक्ष्मण को हराने के लिए, वो उस प्लान में खुद फंस गया. So the moral of the story was, when you are honest, you are the winner. Honest होना भी एक, honest होने से आप क्या होते हो? आपकी winning की chances बढ़ जाते हैं. But if you are mean, that means it is not possible. It is not possible that you win all the time. Okay. Then so that day we did one exercise that is on page number 16. That was choose the correct option. And A2 and A3 we discussed that day. Okay. So now today what we will do? We will do the written part. Okay. So here I am having, which page number is this? This is page number 17 of your book. Okay. Here I am having think and answer, and here one is learn interesting things, in which this is the oral part and this is the written part. So we are going to have written session today. So you need to open your books as well as notebooks. Keep your pencil and eraser ready and tell me, have you written word meanings in your notebook? That day I told you that if I say or not, you have to write the word meanings after explanation of the chapter. You have to write the word meanings. Okay. So I hope you must have written in your notebook. If you have not written, please kindly write it. Okay. So let us discuss and write the question answers that is given on page number 16 and 17. First of all, the question that I have not discussed that day, that I want to discuss orally, then after that we will write the answer to these questions. Okay. So the question where, here it is not in the slide, so I am reading it from the book from page number 16. Two questions are there. What were the artists required to make? Artist को क्या बनाना था? And the second question is, why did Lakshman want to withdraw from the competition? Lakshman ने competition से withdraw करने का क्यों सोचा? Okay, so the answer is, the artists were required to make the bust of the king. Artist को क्या बनाना था? Artist means Lakshman and Chandra. इन दोनों को क्या टास्क दिया गया था कि उनको किंग का बस्ट बनाना है. Okay, उनको किंग के बस्ट की स्कल्पटिंग करनी है. And second question is, why did Lakshman want to withdraw from the competition? Lakshman ने
कंपटीशन से विड्रॉ करने का, अपना नाम वापस लेने का क्यों सोचा? बिकॉज ऑल हिज टूल्स वेयर ब्लंट एंड ही कुड नॉट वर्क विद दैट टूल्स, विद दोज टूल्स। वो उन टूल्स से काम नहीं कर पाता, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपना नाम कंपटीशन से विड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ कम टू दिस इज पेज नंबर 17 and the question is it visible? Is it visible? Do you think the king made a good decision by making the artist switch their tools? क्या आपको लगता है कि किंग ने ये अच्छा डिसीजन लिया कि आर्टिस्ट अपने टूल्स को स्विच कर ले? So the answer is the king made a good decision as it was competition. So the king had the right to frame the rule and by chance he gave justice to Lakshman. किंग ने एक सही डिसीजन लिया कि आर्टिस्ट अपने टूल्स को स्विच कर ले, है ना, बिकॉज ही वॉज द किंग, ही हैड हेल्ड द कॉम्पिटिशन, क्योंकि राजा ने ही कॉम्पिटिशन रखवाया था, तो ये उसके राइट में था कि वो जो भी रूल फ्रेम करेगा। ओके, सो एंड बाय चांस, है ना, बाय चांस और बाय लक, जिसने गलत किया था उसके साथ जो भी हुआ, लेकिन जिसने गलत नहीं किया था उसके साथ गलत नहीं हुआ। सो द डिसीजन दैट द किंग टुक वाज करेक्ट। दिस इज योर ओरल क्वेश्चन आंसर्स। ओके, दिस इज जस्ट टू थिंक एंड आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ गुड आर्टिस्ट कैन वर्क एनी टाइम एनीवेयर विद एनीथिंग दे आर गिवन। डू यू एग्री? एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो किसी भी सिचुएशन में अपना काम को कर लेता है, जैसा भी टाइम हो, जैसा भी सिचुएशन हो। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मतलब ये कि क्या आपको ये बात सही लगती है? वेल फॉर मी यस, इट कैन बी सेड दैट इट्स, बट इट्स नॉट ट्रू ऑल द टाइम। ये सही भी है और गलत भी है, बिकॉज एवरी आर्टिस्ट हैज इट्स हिज ओन स्टाइल एंड द टाइप्स ऑफ टूल्स ही यूजेस इज हिज और हर चॉइस। उस दिन में भी मैंने आपको समझाया था कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने तरीके से, अपने चॉइस की, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, जिसमें वो ईज फील करता है, वो वैसे टूल्स यूज करता है। और जब वो अपने कंटिन्यूअसली जब अपनी चीज़ों को यूज करता है, तो उसे पता होता है कि मैं कौन सी अपनी सी चीज़ किस तरह से यूज कर सकता हूँ। अगर उस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, देन ऑल्सो ही knows how to adjust with those things. So it is yes or it is no also at the same time. Now look here. Here there is a question, learn interesting things. It is again on page number 17 only. This is your written part. After making you understand the questions, we will go for writing work. And the question is, a character is a person from a story. ये वर्ड देखो, कैरेक्टर, द वर्ड इज कैरेक्टर। अ कैरेक्टर इज अ पर्सन फ्रॉम अ स्टोरी। दिस वर्ड कैरेक्टर, if I say the story, the two sculptors, how many characters were there? Broadly, if we see, there were 3 characters. Character क्या होता है वो जब मैं आपको उनके नाम बताऊंगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है? Character means the part, the person or anything जो स्टोरी में जो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। Okay, they are called characters. Can you tell me, so how many characters were there in the story, the two sculptors? Okay, if you will count, there were 4 characters. Okay, but if you will see, you can find out 3 characters. Who were there? Lakshman, sculptor 1, Chandra, sculptor 2, and the king. There were 3 characters. स्टोरी में जितने भी लोग होते हैं वो एक एक कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि आप जब कार्टून देखते हैं मोटू एंड पतलू, तो मोटू एंड पतलू में कितने
is there, Patlu is there, that Inspector Chingam, then Dr. Jhatka, और एक है ना जो कहता है कि कहानी लिखने का तो मेरा 20 साल का तजुर्बा है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। ओके, जे से कुछ नाम है उसका। और उसके बाद हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई हैव टोल्ड? मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, ठीक है, डॉक्टर झटका का असिस्टेंट, देन एक सब्जी वाली, समोसे वाला, चिंगम, है ना, डॉन, और डॉन के 2 सपोर्टर्स, 10 कैरेक्टर्स हो गए। कभी कभी चिंगम के पापा भी आते हैं, है ना। सो इन एवरी एपिसोड देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन मोटू एंड पतलू। सो इन मोटू एंड पतलू देयर आर मोर देन 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। लाइकवाइज अ कैरेक्टर इज अ पर्सन फ्रॉम अ स्टोरी। एक स्टोरी में जो पर्सन होता है वो एक कैरेक्टर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर्सन लिखा है तो पर्सन ही होगा। इट कैन बी एनी ट्री ऑल्सो, इट कैन बी एनी एनिमल ऑल्सो, लेकिन ये जरूरी है कि वो एनिमल का कोई ना कोई पार्ट स्टोरी में हो, एनिमल कहीं ना कहीं से प्रेजेंट हो उसमें। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू टेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ ईच कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब आपको ये बताना है कि स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स थे, एंड ऑल्सो कि उन कैरेक्टर्स के 2 क्वालिटी बताने हैं। जैसे कि लेट अस अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ मोटू एंड पतलू। ओके, मोटू इज 1 कैरेक्टर एंड पतलू इज द 2nd कैरेक्टर। सो व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ मोटू? द फर्स्ट क्वालिटी इज he is very fat, and the second quality is he is very powerful. Okay, Patlu's character is, पतलू का कैरेक्टर कैसा है? उसकी 2 क्वालिटीज है कि वो पतला है लेकिन उसके पास माइंड है, और मोटू का कैरेक्टर कैसा है कि खाली दिमाग, उसके पेट के खाली पेट, उसके दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा ही कहता है ना, अरे पतलू मेरे यार तू ही तो कुछ बोल, काली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। So likewise here in the story there are 3 characters. They have different personalities. That day also I have told you personalities about what one thinks of from the inside and how it looks physically. Okay, how he or she looks physically. So the answer is, there are 3 characters in the story: Lakshman, Chandra and the king. Now the characters are, Chandra is mean and sly. It is sly. Mean and sly means वो चालाक है ना, वो चालाक है और उसकी सोच अच्छी नहीं है। Second, a character of Lakshman is kind and caring. लक्ष्मण भला भी है और दूसरों की केयर भी करता है। एंड द थर्ड इज, द किंग इज क्लेवर एंड विटी। किंग भी क्या है? बुद्धिमान भी है और चतुर भी है, ठीक है। नाउ हियर आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 पार्ट्स। A2 that is your written question answers, A3 that is your oral, and this is A3 that was your oral, and A4 learns interesting things. Now coming to next, open your books and copies. We are going to write question answers. What we are going to write? Question answers. Class 2, you very well know how to write in cursive. You very well know how to write in cursive. So I am going to write in cursive only. Okay, and right now I am not having 3 lines here, so I am writing here in 2 lines only. Okay, I hope you won't feel any difficulty. And of course we have given you the notes, so from that also you can
Chapter 2, the two sculptors try to write in cursive only. I know that it is so long that your written practice is left behind. Then also you try to write in cursive. Now here I am here with question A2, and A2 is answer these questions. Exercise A2, A and S, answer these questions. Now I am going to write question number 1, that is what were the artists required to make. अभी तक मैम ने ये क्वेश्चन को at least 5 to 6 times बोल दिया है, in that part also and this part also. So आप try to learn it orally. जितने बार मैम बोल रही है उतने बार फिर आप रिपीट करेंगे तो ये आंसर आपको लर्न हो जाएगा. Okay, and written practice you can do at home. At least in your home, whatever in whatever register or in whatever copy you are practicing at home, at least you try to write 5 times one answer. एक आंसर को कम से कम 5 बार लिखिए, तो उससे क्या होगा, आपको जो आंसर है वो ओरली भी लर्न हो जाएगा और आपका रिटन भी ग्रो करेगा. ओके, नाउ लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 1. Q.1, question number 1. The question is what were the WER word the artist, ARTISTS, artist required, REQUIRED, required to make. Class 2, please write in a good handwriting, following all the lines. If you feel any difficulty in writing, you can connect to the teacher in the discussion box. And the answer is the artists were required to make, make a bust, a BUST, bust. Bust means head of any sculptor. Bust of the king, OF of THE, the KING, king. What were the artists required to make? The artists were required to make a bust of the king. Artist को king का bust बनाना था. Now the second question is, I am leaving it for 1 minute. After that I will write question number 2. Okay, I am writing the question here, question number 2. After that I will erase it and I will write answer number 2. Question number 2. See students, if you feel difficulty in any of the question, अगर समझने में difficulty हो रही है, you can ask the
did Lakshman, L-A-X. See this letter. In class 1 also I was telling you that be careful while writing X. How you have to write? Go up, एक उल्टा सी बनाना है, उसके बाद एक सीधा सी बनाना है. This looks beautiful. जब आप X अच्छे से लिखते हो, it looks very nice. Again I am telling you. Go up, come down, then again make a C. So this is X, letter X. Why did Lakshman want? W-A-N-T, want. One more thing I want to tell you, whenever you write T, जब भी आप T लिखते हैं, it is line on line. ये line के ऊपर line होता है. लेकिन जब आप L लिखते हैं, तो it is a loop here. This is the correct T and this is the correct L. अगर आप T को ऐसे लिखेंगे, it is wrong. And if you are writing L like this, this is also wrong. So basically, T is line on line and L has a loop. So why did Lakshman want to withdraw? W-I-T-H-D-R-A-W, withdraw from, F-R-O-M, from the competition, C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N, competition. Why did Lakshman want to withdraw from the competition? Please write it fast so that I could write answer here. This is question number 2. I will write answer number 2 on the top. Okay? I am erasing it. Nobody is saying, madam, please sign. कोई भी प्लीज साइड नहीं बोल रहा है. साइड प्लीज. मैम ये बैठता नहीं है, मुझे दिखता नहीं है. मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली. बहुत मिस करते होगे ना अपने फ्रेंड्स को. We also miss you so much. Okay, now I'm going to write answer number 2 here. Okay, I'm writing ANS2 so that it will be no confusion. Answer 2, and the answer is Lakshman wanted. See, here it is want, here it is want, but in answer I will write wanted because of this did. ठीक है, इस did के कारण इस want में ed लगेगा. Lakshman wanted, W-A-N-T-E-D, wanted to withdraw, W-I-T-H-D-R-A-W, withdraw from the competition, F-R-O-M, from the competition. This is the toughest spelling of, one of the toughest spelling. ये जो competition है ना, ये बहुत tough spelling है. इसको अगर आप learn कर लोगे, you are the master. From the competition, because का मतलब होता है क्योंकि. जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, क्योंकि. This because means the same. Because means क्योंकि. Because his tools were blunt. H-I-S, his tools, T
His tools were, and if madam is wrong anywhere, अगर मैम भी कहीं पर L गलत लिखती है तो मैम को बताना है. ओके, मेरे प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स मुझे बताते थे मैडम L has a loop, आपने लूप नहीं बनाया है. ओके, so you also have to tell me if I am writing any letter wrong. Tools were blunt, B-L-U-N-T, blunt, and he could not use them. Okay, if time permits, I will give you question answers of that character question also, and if not, I will close my class after a few minutes. All his tools were blunt, and he could not, C-O-U-L-D, could. Now look at this word, could. Okay, ये could जो होता है इसका मीनिंग होता है it is same as can. जैसे हम कहते हैं ना I can write, I can read, I can dance, वो can का ही एक दूसरा फॉर्म है ये could. Okay, क्योंकि we are talking about the past, that's why this he could is used. He could not use them. So just wanted to repeat it. Lakshman wanted to withdraw from the competition because his tools were blunt. उसके tools blunt हो गए थे and he could not use them. And he could not use them. Okay, just write it, and after that I will write only the heading for the next class. Okay, and I have 2 minutes left. I want to give you a homework now, and your homework is, okay, your homework is some interesting thing. Try to make any 2 or 3 tools out of it. ठीक है, इसमें से जो भी आपको tools दिख रहा है ना, उसमें से any 3 tools you try to draw it. Like ये hammer बहुत easy है, इसको आप बना सकते हो. Okay, and in the next class I will tell you the names of few tools. फिर आपका जो मैचिंग होगा उसमें का नाम लिख लेना कि आपने क्या बनाया है. ओके, लाइक सम टूल्स आर हैमर, सीजर, स्कैल्पल. दिस इज योर होमवर्क ऑफ द डे. दिस इज योर क्लास वर्क एंड द होमवर्क इज यू हैव टू मेक एनी 3 टूल्स आउट ऑफ इट. इसमें से देख के कोई भी 3 टूल्स आपको बनाने हैं. एंड इन द लेटर क्लास आई विल टेल यू द नेम्स. ओके, so class 2, what did we do today? We discussed the 3 parts. One oral question answers. We have written one part of question answers and one part we have discussed, and I have told you about what is a character, and I have told you about the characters of the story, the 2 sculptors. Okay, then till now, till next class, stay safe and study at home and follow the instructions given you by your parents. आपके पेरेंट्स जब आपको बैठा के पढ़ाएंगे तो you have to obey them. आपको उनको obey करना है. Okay, then I will be happy. Okay, so you want to make me happy or not? मुझे अगर खुश देखना चाहते हो तो मम्मी पापा की बात मानना. ठीक है, then आपके घर से जो नेट कनेक्शन है ना उसमें ग्रीन ब्लिंक होगा.
Then